Hi, hello, and welcome to Ataf's Creativity. This is Atufa Khushnood, and today I am going to do the unboxing of Natural Stone Miniature Set, which I purchased from Amazon.in. So let's have a look at what we received from Amazon. So these are all natural stone made of natural stones, and they are used for grinding. So it is basically जो हम लोग ट्रेडिशनली पहले यूज़ होता था. अभी we have got grinders and all the electronic items, but these things were यूज़ इनफैक्ट अभी भी यूज़ होते हैं बहुत से घरों पे, लाइक जैसे सील बट्टा होता है एंड देन आपका वो ग्राइंडर जिसको हम लोग हिमलदस्ता बोलते हैं, आई बिलीव. सो दीज आर द थिंग्स जो अभी भी बहुत से घरों में कभी कभी ओकेजनली हम लोग यूज़ करते हैं. सो नाउ आई एम डूइंग द अनबॉक्सिंग एंड माई डॉटर इज़ देयर विथ मी टू हेल्प मी विद द अनबॉक्सिंग. सो these are there are 5 items, and after the unboxing I was so excited ke immediately after unboxing I even used all the 5 items. So I'll show you. So I have just got little bit of moong and masoor dal, and I put it in the water, thoda soak hone ke liye soaked it in the water, and now I have very well washed all the items, like the miniature stone set, because उसमें थोड़ी सी डस्ट रहती है when you get it. And now I'm going to use the silbatta for grinding the chilies. सो एक चिली लेके मैंने उसको छोटे पीसेस में कर दिया है, एंड दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग इट. सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज़, एंड टू टेल यू कि येस इट इज़ द सील बट्टा इज़ गुड. इसमें यू कैन डू थिंग्स ईजली, मतलब ईजली इन द सेंस कि ऑब्वियसली इट्स टू स्मॉल, तो थोड़ा सा इशू आएगा कंपेयर टू द बिग वंस, बट स्टिल it is worth it. You can still use it for your miniature cooking. So this is how the result is. मैंने उसको चिली को ग्राइंड कर लिया है, एंड एज यू कैन सी कि ठीक ठाक ही ग्राइंड हुआ है, एंड आई जस्ट ट्रांसफर इट इनटू अ स्मॉल बोल. सो दीज आर ऑल माई मिनिएचर सेट utensils that I'm using. Let's see how it turns out to be. So अभी आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग इट, एंड थोड़ा सा पानी दे के मैंने अच्छे से उसको मतलब ट्रांसफ़र कर लिया है, एंड सी दिस इज़ द रिजल्ट. सो आई थिंक इट इज़ गुड इनफ. So now I'm going to use another item for grinding garlic. So I've got 2 cloves of garlic, and I'm going to grind it using this item. And as you can see how I'm doing it. So the result for this was also good enough. And again, this can also be used for your miniature cooking, and in fact for your, not only for miniature, but you can even use it for your household cooking. Not cooking, but थोड़ा छोटा मोटा कुछ कभी करना होता है, so you can do it. And now I'm going to take it out. The grinding is done. It didn't take much time this time, so I'm just taking it out, and I'll show you how it turns out to be. So this is how it turned out to be, and I think it is again very good. Then let's try this next item. I am trying to make a paste of some pulses, moong and masoor dal, जिसको मैंने पानी में भिगा के रखा था थोड़ी देर के लिए. So I'm going to use this one. I'm not sure exactly इसको क्या बोलते हैं, चक्की बोलते हैं, क्या बोला जाता है, I'm not sure about it. So now the thing is कि अब इसका जो रिज़ल्ट है वो हम लोग को देखना है कि कैसा रिज़ल्ट आता है इसका. So अभी ये मैं यूज़ कर रही हूँ. इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, बिकॉज इट्स टू स्मॉल, और उसकी हैंडल भी बहुत पतली और छोटी होती है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है इसको घुमाने में. और इसीलिए मैंने एक दूसरे ग्राइंडर में दाल ग्राइंड करने की कोशिश की है, एंड वील कंपेयर कि किस में बेटर हुआ है. आई थिंक ये वाले में बेटर हुआ है, क्योंकि ये ईज़िली एक्सेसिबल, मतलब ईज़ी टू एक्सेस है, और थोड़ा आसान है उससे कंपेरेटिवली. सो इसमें मेरा रिजल्ट्स बेटर आया था. आई विल शो यू. मैं ये दाल निकाल लूँ एक दूसरे कंटेनर में, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस. और अब मैंने जो है थोड़ा सा ज़ीरा सिलबट्टा में पीसा था, जिसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा ही आया है. इट वाज अगेन वेरी गुड, एंड इट इज़ गुड टू बी यूज्ड. सो हियर यू सी द रिज़ल्ट्स. जो मैंने 4 चीज़ें पीसी थी, एंड आई हैव यूज्ड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल स्टोन ग्राइंडर्स, जिसमें से 3 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. 2 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए. आई लेट यू नो विच आर दोज 2 दैट आई डिडंट लाइक प्रिटी मच. So this one was average.
Then the next one was good. Then the third one was also good. The fourth one was not pretty much good. And the fifth one was definitely a good one. Thanks for watching Ataf's Creativity. See you in the next video. Until then, take care. Bye bye.